whenever cigarettes or drugs are found. Layoffs and everything happening in the job market, or is it the college fault? But this is the reality. ROI isn't that great looking at the 20 lakhs which you will be putting in for a degree here. So recently I've been getting a bunch of DMs asking me questions like कि भाई, how's Manipal Jaipur? What's the fees there? What is the placement scene? And a bunch of many questions. So I thought, why not just sit down and let's talk about it honestly. If you're new here, hi, my name is Vedant Nara. I'm currently a student at Manipal University Jaipur. I've lived this life 3 years and I think I'll be the perfect person to guide you in whether you should take admission into this college or not. So let's just get right into it and let's talk about the campus. To be very honest, the campus is just so beautiful. मुझे around 1 साल लग गया था just to get used to those beautiful sunsets. Everything about the campus is just so pretty. The grand stairs, the amphitheater, the views from the classrooms and the most famous dome which you must have seen in many pictures of the college. कॉलेज इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि ये आपके एडमिशन ना लेने के डिसीजन को रिवर्स कर सकता है. The only negative about the campus is that it's 25 to 30 kilometers away from the Jaipur city, which takes about an hour to travel. Hostel life is pretty amazing too. काफ़ी सारी DJ nights और काफ़ी सारे events hostel में ही organize होते हैं. Hostel rooms भी काफ़ी अच्छे हैं compared to other colleges. You have double and triple occupancy options. And yeah, the rooms are air conditioned and the Wi-Fi is okay, like not too great, not too bad. And mess का खाना भी ठीक ठाक है, like कभी कभार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और कभी कभार बहुत ही गंदा. Hostel mess has meal options for veg, non-veg and Jain food, out of which non-veg is just served 3 to 4 times a week. Hostel timings are from 6 AM in the morning to 9 PM in the evening. Between this, you can come and go as you please. After this time, if you want to enter or exit the hostel, you will need some permissions. Okay, so let's now talk about the clubs. Clubs are again a positive part of MUJ. I mean, you name it. Robotics, coding, content creation, dance, theater. तुम्हें हर तरीके का क्लब यहाँ पे मिल जाएगा और सारे ही क्लब्स काफ़ी एक्टिव है. Even the seniors are very helpful in case you want to learn a new skill, but you'll have to reach out to them. तो यार MUJ का क्राउड काफ़ी डाइवर्स है. मतलब इंडिया के हर पार्ट से तुम्हें लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, which is a good thing for exposure. और जहाँ तक बात रही गुड कंपनी की, तो यहाँ पर तुम्हें हर तरीके के लोग मिल जाएंगे. कुछ लोग होंगे जो एकदम ही नर्ड्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेते हैं, और कुछ लोग होंगे जो एकदम 4 साल की वेकेशन पर आए हों. जहाँ तक बात रही ड्रग्स एंड स्मोकिंग कल्चर की, तो यार यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे. बट एट द सेम टाइम मैंने किसी को भी इस चीज़ में फोर्स होते हुए नहीं देखा. आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन द हॉस्टल एंड द कैंपस प्रेमिसेस, बट स्टिल तुम्हें वो कॉरिडोर्स में स्मोकिंग की स्मेल आ जाती है. But authorities do take a strict action whenever cigarettes or drugs are found. So before discussing about the fee structure, I would like to give a small shout out to the MUJ stores. They make some of the coolest Manipal merch I have ever seen. Their t-shirts are not like those cheap ones and they are really good quality. I have ordered a few from their website and I think you'll see me wearing them in the videos to come. I have given their website link in the description, so do check them out. Now let's discuss about the fee structure. तो यार अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को मिलाकर MUJ अराउंड 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करता है. अब हर एक कोर्स के फी स्ट्रक्चर को इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर आप अपने कोर्स के हिसाब से फी स्ट्रक्चर देख सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपनी ब्रांच दैट इज BTech CSC का एग्जाम्पल दे देता हूँ. BTech CSC की एनुअल फीस इज 4,76,000, which is a lot. And you multiply it by 4, which becomes 19,04,000.
And just for comparison, when I took admission into this college, the fees was 3,39,000. ऐसे ही इस कॉलेज का नाम मणिपाल नहीं। कॉलेज काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है जो कि आप सेम लिंक पर देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इस साल MUJ ने बीटेक की कंप्यूटर स्पेशलाइजेशंस को हटाकर लाइक CCE ब्रांच, AIML ब्रांच एंड बहुत सारी और ब्रांचेस थी जिनको हटाकर केवल एक ही ब्रांच ऑफर हो रही है, दैट इज CSE। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन, आई थिंक विल नो इन द इयर्स टू कम। एंड यार हॉस्टल फीस आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है कि आप डबल रूम या ट्रिपल रूम लेते हो। एंड या मेस फीस भी अलग से चार्ज होती है विच इज अराउंड 70 to 80,000। Talk about the most important part, that is the placements। तो यार प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए काफी सारी कंपनीज कैंपस आती हैं लाइक डेल, Accenture, Infosys, Nvidia, but don't get too excited seeing these big companies coming to the campus because the job offers are still less compared to the amount of the crowd. So Microsoft came to the campus offering third year BTech students internships. There are around 2,500 BTech students, out of which only 5 were selected. Similarly for Dell, which only offered 20 seats. I don't know if it's happening because of the layoffs and everything happening in the job market, or is it the college fault? But this is the reality. It's not like it's possible to get a good package, but you will have to be among the best. If you care about the statistics, तो यार average package 8.5 LPA का है और median salary is about 7.5 LPA. And the ROI isn't that great looking at the 20 lakhs which you will be putting in for a BTech degree here. But I would say if you're in the top 20%, 15 to 20 LPA is pretty likely. So यार MUJ की campus life is no doubt one of the best. And crowd ज़्यादा diverse होने की वजह से आपको exposure भी काफ़ी अच्छा मिलेगा. But at the same time, fees is just too high and उसके ऊपर ROI भी उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है. So final verdict, would I recommend it or not? Actually, it's a bit complicated. It really depends upon the choices you currently have and if MUJ stands out of those choices. In case if I have missed something or if you need any help, you can comment down below or even DM me on Instagram. Link will be in the description. Thank you for watching guys, and I think I'll see you in the next one.